Hello friends, welcome to Power Electronics class. In this session, we will continue the topic of forward blocking mode of SCR. So last session में मैंने आपसे बात की थी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की. हमने क्या देखा था कि J1 जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड, J2 जंक्शन रिवर्स्ड बाइस्ड है और J3 जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड है. एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, जो जंक्शन रिवर्स्ड बाइस्ड होता है उसके अराउंड डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है. सो देयर विल बी डिप्लीशन layer around J2 junction. डिप्लीशन लेयर वो लेयर होती है जहां पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है. फ्री चार्ज कैरियर मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. डिप्लीशन लेयर में ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही होल्स होते हैं. डिप्लीशन लेयर में सिर्फ इमोबाइल आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, जो कि इमोबाइल होते हैं, जो कि चल नहीं सकते हैं. सो डिप्लीशन लेयर विल नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर. तो जब डिप्लीशन लेयर में फ्री चार्ज कैरियर मूव नहीं कर सकते हैं, सो करंट विल नॉट बी पॉसिबल इन दिस मोड. This is anode terminal, this is cathode terminal. In forward blocking mode, anode is connected to positive terminal of supply and cathode is connected to negative terminal of supply. As you know that SCR is 4-layer device, PN. As I told you in last session, in forward blocking mode, gate terminal is open circuited. That is, it is isolated from cathode terminal. Gate current is 0 and this is gate supply. And anode to cathode voltage will be less than forward breakover voltage. As I told you, in forward blocking mode, gate current is 0 and anode to cathode voltage will be less than forward breakover voltage. VFBO means forward breakover voltage. It is the maximum voltage in forward blocking mode which SCR can
withstand. If we will increase the anode to cathode voltage greater than forward breakover voltage, the SCR will get turned on. अगर हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से ज्यादा कर देते हैं और SCR हमारे किस कंडीशन में है? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है. SCR will get turned on. So forward breakover voltage is the maximum voltage in forward blocking mode which SCR can withstand. जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था, J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता है, J2 जंक्शन रिवर्स्ड बायस्ड होता है और J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता है. As we know that from basic electronics, the junction which is reversed bias, there will be depletion layer around it. So there will be a depletion layer in around J2 junction. As we know that from basic electronics, the width of depletion layer will be more in lightly doped region. जैसा कि हम जानते हैं कि डिप्लीशन लेयर विड्थ ज्यादा होती है जो रीजन लाइटली डोप्ड होता है. तो SCR का लाइटली डोप्ड सेक्शन कौन सा है? N सेक्शन है, N लेयर है. तो यहां पर डिप्लीशन लेयर विड्थ क्या होगी? ज्यादा होगी. Since the doping level of this P layer is greater than this N layer, जैसा कि हम जानते हैं कि P लेयर का डोपिंग लेवल इस N लेयर के डोपिंग लेवल से ज्यादा है, इसलिए इस P लेयर में डिप्लीशन लेयर विड्थ कम होगी. इसीलिए इस रीजन में थिकनेस डिप्लीशन लेयर की ज्यादा है और इस लेयर में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम है. सो व्हाट इज दिस? This is depletion layer. As we know that in N layer there will be positive ions. And in N layer there will be negative ions. This is depletion layer which is formed near J2 junction, which will not allow the movement of free charge carrier. I told you in last session, in p-type semiconductor, holes are majority charge carrier. Holes are majority charge carrier.
and electrons are minority charge carrier in p-type semiconductor. In n-type semiconductor, electrons are majority charge carrier. These are the electrons. These are the electrons. And in n-type semiconductor, holes are minority charge carrier. In p-type semiconductor, electrons are minority charge carrier. In n layer, electrons are majority charge carrier. So, this is representation of holes. This is representation of electrons. And this is depletion layer around J2 junction. There are no free charge carrier in this layer. Only immobile ions are present. Depletion layer फ्री चार्ज करियर को मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है. So ideally in forward blocking mode there will be no current will flow from anode to cathode due to this depletion layer. The current will flow only in that condition if all three junctions are forward biased. But practically a small leakage current will flow from anode to cathode in range of microampere to milliampere. अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और होल्स पे पॉजिटिव. सो एनोड पर कैसी पोलैरिटी है, पॉजिटिव, और होल पे पॉजिटिव. तो एनोड का पॉजिटिव पोलैरिटी इस होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा. इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. कैथोड पे कैसी पोलैरिटी है, नेगेटिव. तो ये इलेक्ट्रॉन को कैथोड क्या करेगा, रिपेल करेगा. एनोड होल को रिपेल करेगा, एनोड होल को रिपेल करेगा, और कैथोड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. Holes will be attracted toward cathode due to opposite polarity, and electrons will be attracted by anode due to opposite polarity. होल किधर मूव करने की कोशिश करेगा, कैथोड की तरफ ड्यू टू अपोजिट पोलैरिटी, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने की कोशिश करेगा, एनोड की तरफ. बट ड्यू टू दिस डिप्लीशन लेयर फ्री चार्ज कैरियर कैन नॉट मूव थ्रू दिस लेयर. तो आइडियली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में इस SCR में करंट फ्लो नहीं हो सकती है.
but practically a very small current will flow from anode to cathode in forward blocking mode in range of microampere to milliampere. Therefore, in forward blocking mode, anode to cathode current will be slightly greater than or equal to 0 in range of microampere to milliampere. Practically. But ideally, anode to cathode current will be 0 due to this depletion layer. So, in forward blocking mode, current will be very small. And whole supply voltage will be across this SCR. So in forward blocking mode, anode to cathode voltage will be approximately equal to supply voltage. This is high voltage and very small current. So in forward blocking mode, we will get very small current and we will get high voltage across SCR. Current is very small and anode to cathode voltage approximately equal to supply voltage. Very small current, this is high voltage. So SCR will behave as open circuit. In this situation, SCR will behave as open circuit. Since anode to cathode current is very small, it is negligible. Therefore, in this situation, SCR is in off condition. SCR फॉरवर्ड बायस तो है लेकिन गेट करंट 0 है या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेकर वोल्टेज से कम है. So in forward blocking mode, SCR will in off condition. Current will not flow from anode to cathode. This current will be
approximately equal to 0. This current will be approximately equal to 0. In next session, I will discuss second mode of SCR, that is forward conduction mode.